माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने और एक टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है, वो है रिसर्च के बारे में। तो एजुकेशन रिसर्च की मीनिंग हम समझेंगे और फिर इसमें जो टाइप्स है, ये एम ए जो फर्स्ट सेम है वहाँ पर भी आपको आता है सिलेबस में। इस तरह से थर्ड और फोर्थ यूनिट में जो है आपका सेमेस्टर वहाँ पर भी आता है। रिसर्च इन कॉमन पैरालाइज रेफर्स टू सच नॉलेज एज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टाइप। इसमें हम बोल देंगे पैरालाइज, जैसे पैरालाइज रेफरेंस टू ईच फॉर द नॉलेज एज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर द, उसको बोलते हैं पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। इन रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, a careful investigation or enquiry special through search for new facts in any branch of knowledge। तो यहाँ पर हम उसको रिसर्च बोलते हैं, जहाँ पर भी हम केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम इंक्वायरी करें स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन रिसर्च है उन फैक्ट्स को जानने के लिए नॉलेज बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द और उस अपडेशन जो है उसमें अपडेट करते हैं जो नॉलेज है और नॉलेज उसमें, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। उसमें जो है उनका एजुकेशन रिसर्च जो है is a process of solving problems related to education. Education, it is a careful and critical search for knowledge related to education. It is the formal process to correct previous errors, manipulate and control variables, verify and extend theories, and generalize and discover new things with an ultimate objective to advance for the welfare of the society. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम एजुकेशन रिसर्च में लिख सकते हैं, ये वाली डिफिनीशन आप इसको देख सकते हैं और अपनी कॉल पे लिख सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जहाँ पर भी आपको कोई बोलेगा व्हाट इज़ एजुकेशन रिसर्च या मीनिंग है, तो ये वाली डिफिनीशन आप लिख सकते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन। It is a careful and critical search for knowledge related to education. It is a formal process to correct previous errors, manipulate, control, verify, extend theories, generalize, and discover new things with an ultimate objective to advance for the welfare of the society. इसमें है, अगर हम देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑफ एजुकेशन रिसर्च is involves a process which is formal, systematic, and exhaustive. The investigator has to proceed very systematically to achieve this his objective. He has to be very careful in making manipulations, applying controls, making analysis of data, testing hypotheses, making generalization for the advancement of knowledge in the field of education. तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो डिफिनेशन है आप अपने पास पे लिख सकते हो। ये है ये हम कम इंक्लूड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च में। ये सिस्टमेटिक है, ऑब्जेक्टिव हासिल करने का, एनालाइज होता है, टेस्ट होता है, होता है, जनरलाइज होता है और लास्ट कंक्लूजन होता है। इसमें है education research investigates theories and skills of education as an education both science and art. Education research is scientific in the sense that it involves the testing hypothesis. Education research corrects previous errors and misconceptions and brings new facts into light. It suggests improvements in different areas related to education. तो ये भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स, डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन जो है ये भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। तो इसके बाद है और एक इम्पॉर्टेंट, इसमें आप लिख सकते हो इट इज़ ओपन न्यू चैनल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन नॉलेज, कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, कंस्ट्रक्टिव ऑफ नॉलेज इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। It changes the personality of the researcher. The researcher develops a scientific outlook. He develops a research lifestyle, having positive attitude towards things. He is a systematic and objective in approach, free from superstitious, having a critical and independent thinking. तो ये वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है इसमें रिसर्च में, ये आप लिख सकते हो। इसके बाद है इसमें और भी बहुत सारा मटेरियल है, जैसे अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे of education research, the scientific era in the physical sciences. Beginning in the 17th century, the emergence of education science is only 8 years old. It was due to not only the complex nature of the phenomena to the studied, but also to show the progress in the development of the measuring tools for collecting data of education interest. The history of the various developments in the education research therefore is closely linked with some of the significant developments in the history of the measurement and testing. तो इसमें ये पोर्शन अपनी पार्ट लिख सकते हो बाद में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंफॉर्मेशन है। तो इसमें है द हिस्ट्री ऑफ द इट्स ग्रोथ कन्वेंस में बी डिवाइडेड इनटू 4, जैसे एजुकेशन रिसर्च बिफोर 1900, एजुकेशन रिसर्च फ्रॉम 1900 to 1920, एजुकेशन रिसर्च फ्रॉम 1920 to 1945 एंड एजुकेशन रिसर्च आफ्टर 1945। ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारा ये जोन्स है। वेज ऑफ नोइंग द पर्सनल एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन, एक्सपर्ट, थ्योरी, लॉजिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, साइंटिफिक मेथड, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सीखने में। उसमें है नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये वाला जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम जस्टिफाई करते हैं, वाई टू नीड टू स्टडी।
रिवाइज द लिटरेचर, लोकेटिंग रिसोर्स, सिलेक्टिंग, समराइज, ये दूसरा। तीसरा है पर्पस एंड मेथडोलॉजी, हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पर्पस एंड मेथडोलॉजी, ये वाला पोर्शन है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च, फिर है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर है पर्पस, इसमें हम पर्पस स्टेटमेंट, फाइनलाइज, नैरोइंग, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा है ला, ये और एक है कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर इसमें के बाद है आपका रिपोर्टिंग एंड इवेलुएटिंग, फिर है आपका एनालाइसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो फिर हम कंक्लूजन रिव्यू लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये वाला जो है स्टेप 4 है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद हम जाते हैं यहाँ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लास्ट में रिपोर्टिंग। तो ये कुछ स्टेप्स है, आप रिसर्च आप देख सकते हो, और मैंने इसको जूम करके भी दिखाया आपको। उसके हैं यहाँ, ये है स्टेप्स। अब है टाइप्स ऑफ रिसर्च में आएगा बेसिक रिसर्च, फिर दूसरा है आपका बेसिक रिसर्च के बाद और है बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च है वो वन मोर है इसमें है। एक तो बेसिक रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च भी है, एक्शन रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ये जो रिसर्च की टाइप्स है, 3 टाइप्स मेजर है, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। तो बेसिक में आपको क्या है, जैसे बेसिक रिसर्च है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। It is aimed to discover the basic truths and thus to establish the principles. Basic research is primarily concerned with the formation of theories or contribution to the existing body of knowledge. It is major aim is to obtain and use empirical data to formulate, expand or evaluate thinking. ये important है, आप इसको लिख सकते हो अपने कॉपी पे। दिस इज द कॉल, उसको हम दूसरा नाम है पुअर रिसर्च एंड फंडामेंटल। इट एम्स टू डिस्कवर द ट्रूथ विच, इसमें बेसिक ट्रूथ्स एंड द एस्टैब्लिशिंग दिस प्रिंसिपल्स। बेसिक रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी और कंट्रीब्यूशन टू द एक्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें जो एम टू ऑब्टेन, यूज एंड एम्पिरिकल डेटा, फॉर्मुलेट, एक्सपेंड एंड इवैल्यूएट। तो ये इसमें आता है बेसिक रिसर्च में। उसके बाद है, अगर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, इट रिप्रेजेंट्स द रिगोरियस एंड स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ एनालिसिस। इट एम्प्लॉयज careful handling procedures in order to extend the findings beyond the group or the situation and thus develop theory by discovering proved generalization and principles. Thus, results of this research are not directly applicable in the field situations. It has a little concern for the application of the findings, social usefulness of the findings. So, ये है बेसिक रिसर्च। इसके बाद है अप्लाइड रिसर्च में दूसरा क्वेश्चन, इट इज़ डायरेक्टली टुवर्ड्स द इमीडिएट स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जहाँ पर आपको ये चीज़ें लगी, जैसे इट इज़ परफॉर्म इन द रिलेशन टू एक्चुअल प्रॉब्लम अंडर द कंडीशंस इन विच दे आर फाउंड इन प्रैक्टिस। द गोल ऑफ द अप्लाइड रिसर्च इन टर्म्स ऑफ द adding scientific knowledge occurs only on secondary position. It replaces importance on a problem here and now. It has most of the characteristics of basic research, but its methodology is not as rigorous as that of basic research. Findings are to be evaluated in terms of the local applicability and not in terms of the universal validity. It is main intent to improve school practices and to a greater teacher effectiveness in practical manner. Most of the problems faced with the teachers, policy planners, administrators solve through this type of applied research. तो इसकी बहुत एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, आप देख सकते हो इसमें अप्लाइड रिसर्च हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक्शन रिसर्च में और एक टाइप है, उसमें हम क्या करते हैं, फिर मोर ऑन एक्शन और प्रैक्टिकल वर्क देन ऑन थ्योरी। हियर क्वेश्चंस ऑफ डे टू डे लाइफ सिचुएशंस आर टेकन अप विद a view to improve the practical situation. Thus, action research is similar to the applied research in many ways. Applied research involves a large number of samples as compared to the action research. Action research carried out by teachers, principals, or headmasters of the education institutions, administrators, supervisors. Action research is restricted to the classroom practice. Almost every teacher faces a number of problems in the classroom situations which need immediate solutions. For example, the problem may be poor English spelling of the students, poor handwriting, problem with indiscipline, and problem with the slow learner. Then, this type of research, it is a type of research in the field of education which is undertaken by the education practitioners to understand or solve the problem of the local social and community. तो ये मोरी ने बोला था, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। और इसकी फीचर जो है एक्शन रिसर्च के है, features of action research, it is informal, it is of a flexible type, it deals with some situational problems. Its goal is to bring about the improvement in the situation. It does not aim at the generalizing of any type. Its outcomes are not taken up in a formal way. The problem is a very real, as it takes out of some
classroom situations. It is a self-evaluative. It use of action research is direct and immediate. तो ये important point है regarding that features. अब है इसकी नीड क्यों है, नीड ऑफ द एजुकेशन रिसर्च इज एजुकेशन टुडे इज child centered. All around development of the personality of the child is one of the important goals of the education. Education research is needed to solve various problems related to measurement, evaluation, development of personality of the child. The meaning we give to the education today is more vast and complex. It is a cluster of the difficult travelers, aggregate of process based on the specific techniques and actions which individuals and groups that is organized, planned, and controlled and evaluated. In order to solve the complex of the relationships and processes, considerable research is education is needed. Education is a both science and art. As a science is based on theories and laws and principles, as art it is an activity and an application which requires skills and training. In order to make an effective application of the laws and principles and to provide training in the skills and techniques, education research is needed. उसमें है education research is of much of significance to improve the art of the teaching to make the students learn effectively. The advancement that the material world has made it has given rise to problems of theoretical. तो इन चीज़ों के ज़रिए से भी हम इसमें रिसर्च कर सकते हैं. Education research affects personality of the researcher. It teaches how to solve problems and to realize truth. He is not only able to accept things others unless he tests them. Kathas, tu kothas gishu? Tu kothas gishu? Research is not the one. Thank you very much. Live